Hello and welcome to the online classes of Gokuldas Public School, Khargone. I am Kritika Paliwal and you are studying English with me. So as we have completed the chapter adjectives, okay? So the next chapter that we are going to study is a and the. That is chapter number 10 of your first term fancy book, a and the. For this you have to open your first term fancy, and for this you have to probably open the page number 45 of your first term fancy. Okay, fancy number 1. So please open your first term fancy book, page number 45. So before we start the explanation on a and the, let me first introduce all of you with two terms, vowels and consonants. Okay, so what are vowels? V-O-W-E-L-S. What are vowels? Do you know what are vowels? I think I have discussed about vowels when we were studying I guess when we were studying this singulars and plurals. Okay, so there were some rules in singulars and plurals which included vowels, right? So vowels, there are only 5 vowels in English alphabet. Okay, there are only 5 vowels. What are they? A, E, I, O and U. So these 5 are called as vowels. Okay, all these 5 letters are what? These are all vowels. Now what are consonants? Okay, what are consonants? The letters in the alphabet, in the English alphabet, except all these 5 vowels are called consonants. इन 5 alphabets को छोड़ के जितने भी बाकी के alphabets बचते हैं, उन सारे alphabets को हम कहते हैं consonants. So let's write what are the consonants then, the remaining letters. Okay, so A तो इधर है, B, C, D, E is here, E is a vowel, F, G, H, I is a vowel, J, K, L, M, N, O is a vowel, P, Q, R, S, T, U is a vowel, V, W, X, Y and Z. So my dear students, all these remaining alphabets are called consonants. Okay, so these are the vowels. These are the vowels. A, E, I, O, U. All these are vowels. The remaining ones are called consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R. So many, right? तो अब आप ऐसा तो नहीं इनको रट्टा लगा सकते हैं, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ ये 5 vowels याद रखते हैं. इनको छोड़ के बाकी के जो बच गए वो consonants, right? So A, E, I, O, U. These 5 alphabets are known as vowels. अब हम ये क्यों सीख रहे हैं vowels and consonants? Because when we will be looking at the use of A and N, जब हम A और N का use देखेंगे, तब वहां पर हमें vowels और consonants का बहुत काम पड़ेगा. And we should be aware of what the set of vowels are and what the set of consonants are. Alright, so these were the vowels and these were the consonants that you should be aware of. Okay, so have a look at it. I am getting aside. Now have you opened page 45 of your first term fancy?
Page 45 of your first term pencil. So we use A and N. अभी हम all together इनका use देखते हैं. A और N हम वैसे कहाँ use करते हैं? Okay, we use A and N when we speak of only one person, one animal, one place or one thing. जब भी हम singulars की बात कर रहे होते हैं, remember singular and plural I taught you, है ना? There we were using A and N, and that time I told you कि we will be discussing it very soon. So this is the time when we are discussing it. Okay? So A and N. When do we use it? जब हम singular terms की बात कर रहे होते हैं. So when we are talking about only one person, one place, one animal or one thing, particularly if we are talking about only singular nouns, we use A or N before the singular nouns. Okay, is it clear? We use A or N before the singular nouns when we are talking about only one person, place or animals or things, right? So let's look upon the use of the letter A. Okay, in your book the use of an is given first. Let's look upon the use of an. Okay, so the use of an. All right, we are looking upon the use of an. So what does the rule says? We use an before the words that begin with a vowel sound. Okay, use of an before the words that begin with a vowel sound. Okay, now what is the meaning of this long line I have written? इस लंबी सी लाइन का क्या मतलब है? We use an. हम an को use करते हैं कहाँ पर? Before the words, उन words के पहले. Before the singular words. अभी कौन से वाले singular words? That begin with a vowel sound. वो singular words जो एक vowel sound से start हो रहे हैं. For example, अच्छा first tell me what are vowels? These ना A, E, I, O, U. So all those letters beginning with these letters, sorry, all those words beginning with these letters, वो सारे words जो इन 5 letters से ही start होते हैं, begin होते हैं, इन्हीं words के पहले हम an use करते हैं. For example, A-double-P-L-E, apple. Okay, now this is a singular apple, only one apple I am talking about. अगर बहुत सारों की बात करते तो I would have written apples, A-double-P-L-E-S, apples. But here I am talking about only one apple. So what will you use here? I told you ना, singular होता है तो या तो A या फिर N उसके पहले हम लिखते ही हैं. We have done an exercise also on the basis of this. So what will you write according to the rule? Let's look at the beginning letter of this word, A. Does it comes under the set of vowels? Absolutely yes. So A is a vowel, right? So according to this rule, all the words that begin with a vowel sound have an before them. So an apple. Okay, वो सारे words जो vowel sound से start होते हैं. Is apple beginning with a vowel sound? Yes. Right? Apple. It is beginning with
A-E-I-O-U, C नहीं आ रहा है इन पांचों लेटर्स में, राइट? तो C इज नॉट अ वोवेल, इट इज अ कॉन्सोनेंट। ऑलराइट, कॉन्सोनेंट से जब भी कोई लेटर, जब भी कोई वर्ड बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, तब उसके पहले एन नहीं आता, so this is wrong, okay? So what is the correct word? The correct thing is we should have started this, we should have wrote A before it, okay? This rule I am going to tell you slightly later. So have you all understood it, that whenever a word begin with a vowel sound, we use an before it, and that word should be singular, okay? Now let's look upon the use of A, okay? Let's look upon the use of A, okay? So we use A before the words that begin with a consonant sound. Use of A. Before the words that begin with consonant sound. ओके, सो ए वैसे ही जैसे हमने एन का यूज किया था, एक वर्ड के पहले यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड के पहले। अभी हमें उस वर्ड में से देखना है कि इज दैट वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यू नो अबाउट कॉन्सोनेंट्स, ओके, जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू अबाउट कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। हमें याद रखना है वोवेल्स कौन कौन से हैं। A-E-I-O-U, these are vowels, ओके। अभी इनको छोड़ के जो भी लेटर बच गया अल्फाबेट्स में वो सारे हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो हम इधर से देखेंगे। सो कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर द वर्ड्स वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट pen, okay, now what we have to do at first, we have to check whether the beginning letter is a vowel or a consonant, okay. So P, does it comes under the set of vowels? Check it fast. In the vowels A, E, I, O and U are there, all right, but this word is beginning with the letter P, तो vowel तो नहीं है P, तो क्या हुआ, consonant हुआ, है ना। और जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे वर्ड्स जिनका बिगिनिंग साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके पहले हम लगा देते हैं ए। समझ में आ रहा है? आई थिंक इट इज क्वाइट इजी टू डू, राइट। ओके, बुक सिंगुलर वर्ड, राइट। इफ इट वुड बी प्लूरल आई वुड हैव रोट बुक्स, ठीक है। अगर प्लूरल नंबर्स होते तो मैंने बुक्स लिखा होता, बुक है तो समझ जाइए कि सिंगुलर की बात हो रही है। तो अभी नाउ लेट्स लुक अपॉन द बिगिनिंग लेटर बी। इज इट अ वोवेल? चेक इट फ्रॉम दैट साइड ऑफ द बोर्ड। A-E-I-O-U comes under vowels, right? B is not there in that set. That means B is a consonant, ठीक है। तो B consonant है obviously, तो according to this rule we should write A before it, okay. So a pen, a book, third word table, okay,
the use of a and an will become much more clear to you. Okay. Just to remember one thing. Just remember one thing, that before the vowel sounds we use an. Okay, and before the consonant sound we use a before the word. Okay, before the vowel sound words we use an, and before the consonant sound words we use a. Okay, only this you have to remember while using a and the before the singular words. Okay. Now just to give me a moment. Now we are going to look up the use of the. Okay. So use of the. ठीक है. अच्छा, रिमेम्बर चैप्टर नंबर 8 कैट स्लीप एनीवेयर, मैंने द प्रोनाउंसिएशन एंड दी प्रोनाउंसिएशन में आपको डिफरेंस बताया था, राइट? सो दैट आल्सो यू हैव टू रिमेम्बर व्हाइल डीलिंग विद द प्रोनाउंसिएशंस. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द यूज ऑफ द. ओके, बिफोर द वर्ड्स. किसी भी वर्ड के पहले द का यूज करने के क्या रूल्स हैं, हम कब द का यूज करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. ओके, द फर्स्ट रूल दैट वी आर गोइंग टू सी इज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. Okay, now particular thing in the sense, जब भी हम किसी particular thing के बारे में बात कर रहे थे, for example, this is a book. Okay, here we are talking about some book. Okay, this is a book. ये एक बुक है, ठीक है. अब वो एक बुक कोई सी भी बुक हो सकती है. Here we are not talking about any particular specific thing. Okay, this is a book. अभी अ देखो, ए का यूज इधर आप देखेंगे, बी कॉन्सोनेंट है, that's why we have used a, right? This is a book. Now this is the book. Okay, this is the book. Abhi now see the book. Okay, why I have written the here? Because पहले तो आप सेंटेंस का मीनिंग देखिए. This is the book which my mother bought. Okay, ये वो बुक है जो मेरी मॉम ने खरीदी है, मेरी मदर ने खरीदी है. ठीक है, अभी इधर फर्स्ट सेंटेंस में, okay, in sentence number A, two sentences I have written in sentence number A. This is a book. इधर हम कोई सी भी बुक की बात कर रहे हैं, दुनिया की कोई सी भी बुक. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हो रही, कोई सी भी बुक की बात हो रही. बट द का यूज किया जाता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्टिकुलर. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? दिस इज द बुक विच माई मदर बॉट. यानी कि ये कोई ऐसी वैसी बुक की बात नहीं हो रही, ये उस पर्टिकुलर
बात हो रही है जो मेरी मॉम ने खरीदी है, मेरी मदर ने खरीदी है, ठीक है, इस सेंटेंस में, है ना। तो ये दुनिया की किसी भी बुक की बात नहीं हो रही, ये उस एक बुक की बात हो रही है जो सेंटेंस में मदर ने खरीदी है, ठीक है। सो दैट दिस इज हाउ the is used before some particular things, okay, like a girl, okay, and the girl. Abhi now here a girl means we are talking about any girl, okay, koi si bhi girl ke bare mein here we are talking about, not any particular girl. But here the, if we are writing the word the before some noun, that means we are talking about some particular noun, okay. Like she is a girl, sorry, let me write Riya is a girl, okay. Now here with the same noun, Riya is the girl, okay. Riya एक girl है in the first sentence. Here we are talking about कोई सी भी girl, okay. Riya is any girl, ठीक है, that we do not know even. But Riya is the girl. Now here we know about Riya with some particular thing, okay. So Riya is the girl who helped me, okay. Riya वो लड़की है जिसने मेरी हेल्प की. अभी here we are talking something particular about Riya, okay. हम उस particular Riya की बात कर रहे हैं जिसने मेरी हेल्प की है, ठीक है. Riya is the girl who helped me. All right. So I guess the first use of the is clear. Maybe it's a little tough, but you know these things, these particular things you are going to study in each and every class of primary, okay, till class 5, 6, 7, 8, okay. Beyond primary also you are going to study the same things. So don't worry if you did not understand the things, okay. Just listen and enjoy. Now use of the. First use is when we talk about a particular thing. Secondly, we use the with the names of some special things. Okay. Second one is we use the with the names of unique things. With the names of unique things, I would say, okay. Unique things in the sense जो दुनिया में एक ही है, ठीक है. जैसे कि some rivers. First of all, तो just let me write, sun. So जब भी हम sun लिखते हैं या बोलते हैं, we will always use the before it. The sun, okay. The sun, all right. The moon, because these are some unique things ना. इनके जैसी और चीजें हैं क्या दुनिया में? नहीं, right? हमें नहीं दिखती है अर्थ से. So the sun, the moon, then with the names of some rivers, okay. For example, the Ganga, all right. The Yamuna. आ रहा है समझ में? Hope so. With the names of some oceans, because these are some unique things, right? So with the names of some oceans, like for example the Indian Ocean, okay. The Indian Ocean. Acha, in class 2 I don't know whether you are familiar with the oceans or not. Just find it out in the net. So oceans के names के पहले भी हम the use करते हैं. Similarly, some mountain ranges which are unique in the world, right?
जब भी हम किसी सेंटेंस में इन चीजों का यूज करते हैं ना, वी ऑलवेज यूज द बिफोर देम. ओके, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, so the Himalayas. Okay, then some historical monuments like the Taj Mahal, the Qutub Minar, the Hawa Mahal. Okay, so this is the use of the. There is one more use of the. Okay, have you heard that story? The thirsty crow. Okay, तो कैसे स्टोरी बिगिन होती है thirsty crow की? Like once upon a time there was a crow. Okay, once upon a time there was a crow. A crow. जब भी हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं तब हम उसके लिए a यूज करते हैं. बट फिर जब हम उस चीज के बारे में एक बार बात कर चुके होते हैं, उसके बाद जब भी हम उस चीज के बारे में बार बार बात करते हैं, we will use the. ठीक है? So this is the use of the. We will revise it once again in the next lecture. We will do the exercise of this chapter. So till then, don't get confused. I'll be back with my next lecture in which I'll explain you more about a and the. Till then, you take care of yourself and bye bye.